मेरा नाम नरेंद्र माली है। मैं पाकिस्तान सिंध पिथौरे से हूँ। मैं यहाँ पर अपनी स्पाइन सर्जरी के लिए आया हूँ अपने पापा के साथ। When he came to us, it was really a very happy moment that somebody from Pakistan had come, which is not very frequent considering the visa issues, and he had come with an ailment which was really difficult. हमने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी स्पाइन की वजह से, क्योंकि इसमें कर्व आ गया था उस वजह से, और मैं सही से चल नहीं पाता था क्योंकि मेरी सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं वॉक थोड़ी बहुत इजीली कर सकता था, मगर रनिंग नहीं कर सकता था। So if this is the spine, he has two histories, medical histories. One was that he is a patient of neurofibromatosis, and second that he had tuberculosis about 4 to 5 years back. As a result of which, this part of the spine, which is the dorsal spine, this got collapsed, and this spine had bent completely. And completely means I cannot even do it, because if I do it, it will break. So the spine, instead of being straight in this part of the body, had become something like this. So it is known as a omega deformity. This deformity is a very rare deformity, and it is one of the most difficult to treat. So the spine was completely bent, the nerves were completely stretched, and then he was barely able to walk. He's about 15 to 16 years old, and he had breathing problems, because when the spine bends, then the lungs get compressed, and his chest was deformed. उसके बाद 1 साल के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मैं रनिंग नहीं कर सकता था, ज़्यादा खेल नहीं पाता था दूसरे बच्चों की तरह। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं इंटरनेट के ज़रिए कोई हॉस्पिटल ढूंढूं जो आउट ऑफ कंट्री हो। फिर मैंने काफ़ी टाइम सर्च किया बेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वगैरह। तो उसमें फिर मुझे डॉक्टर अरुण सर्वा यहाँ इंडिया से मैक्स हॉस्पिटल से पता चला कि वो अच्छे हैं। तो मैंने जो रिपोर्ट्स कराई हुई थी पाकिस्तान से, वो मैंने सब इनको सेंड की, हर चीज़ अपनी, और मैंने बताया मेरी ये प्रॉब्लम है। और फिर हम जब उन्होंने मेरे रिस्पॉन्स दिया सर ने अच्छा, उसके बाद हम यहाँ आए मेडिकल वीज़ा पे। उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया। Very simple people, not very well off, had come from far away, had less of money. The finance was an issue, but we had to take that challenge, and we did all the possible tests. After doing those tests, we had planned the surgery. They had all the faith in this system. They were really comfortable with us, and then we took him up for the surgery. The few things that we had to take care in this particular surgery was the intraoperative imaging that we had with us, and the intraoperative neuromonitoring that actually saved us. जिस तरह डॉक्टर अरुण सर्वा ने कहा कि अब आपकी स्पाइन टेढ़ी नहीं होगी, आप इजीली वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तो फिर मैं बहुत खुश हो गया। Now he is again walking. It is about 8 days of surgery, and he is ready to go. He is walking around the corridors of the hospital. He is happy. मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, किसी को भी इस टाइप की से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होगा, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, आप मैक्स हॉस्पिटल आएँ गुड़गांव में। यहाँ डॉक्टर अरुण है, वो वाकई बहुत अच्छा स्टाफ है। इस तरह मैं डॉक्टर अरुण को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने सर्जरी की। We hope that more patients who need such help should travel to us, so that we can give our best to them, so that they can have good results. And I wish God bless all of us with great results and great success in the disease and the problems of the patient. Shabakh.